भक्ति करने वाले हो, वो सभी याद उनको करते हैं. They remember him, whether it's bhagats, whether it's those who pray, those who carry out spiritual endeavor, they all remember him. उसका नाम फिर पतित पावन भी है. बच्चे जानते हैं कि भारत पावन था. He is called the purifier. Children know that Bharat was pure. और प्रवृत्ति मार्ग था. देखो प्रवृत्ति मार्ग है, जैसे लक्ष्मी नारायण, तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था. It is called the household path. You see, Sri Lakshmi and Narayan, that was the household path, the religion of household. जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था. और भारत में पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ था. It was called the original eternal deity religion. At that time in Bharat, there was purity, happiness and peace. Everything was there. क्योंकि समझाए जाते हैं कि प्यूरिटी या पवित्रता है तो शांति भी है, तो सुख भी है, तो संपत्ति भी है. It is explained that when there is purity, there is happiness and there is peace, and then there is also prosperity. अगर पवित्रता नहीं है तो नो प्यूरिटी, नो पीस, यानी शांति भी नहीं तो सुख भी नहीं. If there is no purity, then there is no peace, and if there is no peace, there is no happiness either. तो कोई शांति के लिए भटकते रहते हैं, शांति के लिए जंगल में फिरते हैं. शांति चाहिए, शांति चाहिए. They wander around for peace. They go into the jungles for peace. They want peace. They want peace. और कोई एक को भी शांति नहीं है. क्यों? कि न बाप को जानते हैं, न अपन को फिर जानते हैं. Not a single one has peace. Why? Because they don't know the Father and they don't know themselves either. न अपने को ऐसे जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर ऑर्गन से इन द्वारा कर्म करना होते हैं. They don't know themselves as souls and they don't recognize that they are souls and that they have the body, the organs, that they have to perform actions through these. और मेरा स्वधर्म शांत है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है. तो जब कि आत्मा का स्वधर्म शांत है, अहम आत्मा, तो हमारा स्वधर्म, हम आत्मा का स्वधर्म है शांत. ये है उनके ऑर्गन्स, शरीर. I am a soul and that my original religion is peace. These are my organs. This is my body. And that actions are performed through these. और ये भी मालूम है आत्मा को, तो हम आत्मा निर्वाण धाम के वासी है अथवा परम धाम के वासी है. The soul knows that it is the resident of the land of Nirvana. It is the resident of Param Dham. यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये शरीर का आधार ले हम पाठ बजाते हैं. We play our part, having taken support of this body here on the field of actions. तो आत्मा को तो मालूम है कि हमारा स्वधर्म शांत है, यानी गले में हार है. The soul knows that its original religion is peace, that peace is the garland around its neck. और मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं जंगलों में, यहाँ वहाँ पूछते हैं मन को शांति कैसे मिले. Human beings stumble around for peace. They wander here and there. They ask, how can the mind be peaceful? अब उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा का स्वधर्म शांत है. They don't know though that the mind and the intellect are part of the soul and that the original religion of the soul is peace. और आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान है. That the soul is the child of the Supreme Father, the Supreme Soul. और वो भी शांति का सागर है.
तो हम शांत के सागर के संतान हैं, आत्माएं. He too is the ocean of peace, and we souls are the children of the ocean of peace. जैसे वो शांति तो उनका धर्म है, कोई शांति ढूंढने थोड़ी पड़ती है. तो जब के सब कोई अशांति है, देखो सारी दुनिया को अशांत है, तो सारी दुनिया का क्वेश्चन हुआ ना बच्ची. This peace is the religion of the soul. There's no need to search for peace. The whole world has become peaceless. And so, child, it's the question of the whole world, isn't it? देखो सब कोई कहते हैं पीस कैसे स्थापन हो. अभी पीसलेसनेस तो सारी दुनिया में है, शांति. Everyone asks, how can there be peace? But peacelessness exists in the whole world. तो क्वेश्चन ये होते हैं सारी दुनिया का, भाई सारी दुनिया पतित है, सब जानते हैं हम पतित है, तो सारी दुनिया का ही सवाल हुआ. So it's the question of the whole world. The whole world has become impure, and so everyone asks, how can there be peace? अभी सारी दुनिया का मालिक तो ये जिसका तुम सुना, शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंचा भगवत. This one is now the master of the whole world, the one whose praise you heard. Salutations to Shiva. अभी शिव कौन है ये तो मनुष्य कोई जानते ही नहीं है. पूजा करते हैं, कई अपन को ही कह देते हैं शिवोहम. अभी शिव परमपिता परमात्मा है, अपन को कह देना शिव. अभी शिव तो एक ही है बाप, अपन को शिव कहना ये तो बड़ा पाप हो गया. In fact, there is only one Shiva, but some say Shivoham. They call themselves Shiva, and so to call yourself Shiva, call yourself the Father, is the greatest sin. क्योंकि शिव ही एक है जिसको ही पतित पावन कहा जाता है. मनुष्य को तो कोई को पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता. There is only one Shiva, and he alone is called the purifier. No human being can be called the purifier. ब्रह्मा को पतित पावन नहीं कहा सकता है, विष्णु को पतित पावन कहा नहीं जा सकते हैं, शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाते हैं, न मनुष्य को लक्ष्मी नारायण या ये जो देवती देवता उनको भी कोई पतित पावन कहा जाते हैं. Brahma cannot be called the purifier, Vishnu cannot be called the purifier, Shankar cannot be called the purifier. No human being or the deity can be called the purifier. पतित पावन तो सवा एक के कोई है नहीं, और सर्व का सदगति दाता तो वो एक ही है. No one is the purifier except that one, and only the one grants salvation to everyone. तो कोई भी मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकते हैं, कोई भी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते हैं. No human being can purify another human being. No human being can grant salvation to another human being. क्योंकि ये तो है सारी दुनिया का क्वेश्चन बच्ची. इसलिए गाया जाते हैं कि तो मैं नहीं, सबका सदगति दाता है. Child, it's a question of the whole world, is it not? It has been praised that this is the one that grants salvation to everyone. सब पतितों को पावन करने वाला. तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे देखो, भारत पावन था जब सतयुग था. He is the purifier of all. The father sits and explains. You see, child, when Bharat was pure, it was the golden age. जब पावन था, अभी पतित है, तो ये सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला कौन? तो वो कहते हैं कि उनको ही तो याद करना चाहिए, नहीं? It was pure and it has become impure, and so that father asks, who is it that purifies everyone? That is the one that should be remembered. और तो कोई गुरु गोसाई कोई को पतित को पावन तो नहीं बना सकेगा बच्ची, no. Child, no guru can purify anyone, can they? ये तो समझा दिया है कि जो भी गुरु गोसाई यहाँ के हैं वो खुद ही पतित है. It is explained that all the gurus that exist here, they're all impure. पावन हो नहीं सकते हैं क्योंकि है ही पतित दुनिया. They cannot be pure because
This is an impure world. क्योंकि उसमें भी सिद्ध कर दिया है बाप ने कि देखो ये जो कहते हैं कि ये महान आत्मा है या पावन आत्मा है, पुण्य आत्मा है, नहीं, ये लोग सब पाप आत्मा है. Baba has actually proved that all of these are impure souls. They are not great souls or pure souls or charitable souls. क्यों? फिर बाप बैठ के समझाते हैं, देखो मुझे अपने बाप को तो जानते ही नहीं है. Why? Because the father sits and explains. Because they don't know me, the father. शिवाय नमः. ठीक है बच्ची. अच्छा, भारत में शिव जयंती गाई जाती है, जरूर आया हूँगा. Salutations to Shiva. Shiv Jayanti is celebrated in Bharat. Why? Because he must definitely have come. तो ऊंचे तो ऊंचा चढ़ा ना, जरूर वही पतितों को पावन करने आया हूँगा. So he is the highest on high. So he must definitely have come to purify the impure. कब आते हैं? वो कहते हैं कि बरोबर कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के संगम युग. इसको कॉन्फ्लुएंस कहा जाते हैं, फिर कुंभ की कहा जाते हैं. When does he come? He comes at the time of the confluence of the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age. It is a time that is called Kumbh, the meeting, the confluence. समझा नहीं? ये कुंभ को कॉन्फ्लुएंस कहा जाते हैं. वो कुंभ नहीं, पानी का और सागर या का या पानी और पानी का नदियों का, वो तो हुआ जिस्मानी आर्टिफिशियल नाम कुंभ कर दिया है. This is called Kumbh, the confluence, not that Kumbh. Kumbh where the meeting of the waters, the ocean and the rivers take place. That is the artificial confluence, the Kumbh. नहीं तो कुंभ इसको कहा जाते हैं जबकि सागर, ज्ञान का सागर पतित पावन आए सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं. This is called the Kumbh, when the purifier, the ocean of knowledge, comes and purifies all souls. पावन बनाए करके बरोबर है. ये भी जानते हो कि भारत जब देवी देवता धर्म था, एक ही धर्म था ना बच्चे. देखो, When he comes, he purifies Bharat. At that time, there was only the one religion. Was there not, child? ये चित्रों में बताए जाते हैं, ये गोले में भी, कि बरोबर जब सतयुग है तो त्रेता नहीं है, त्रेता है तो फिर द्वापर नहीं है, सतयुग पास्ट हो गया, द्वापर कलयुग आते हैं, यानी वो पास्ट हो गया, पास्ट हिस्ट्री ये हो गया ना बच्ची. You see, it is explained in the picture of the cycle. When it was the Golden Age, the Silver Age didn't exist. And when it was the Silver Age, the Copper Age didn't exist. At that time, Satyug becomes the past. The past is the history. सतयुग था जिसको कहा जाता है सूर्यवंशी राज था. अच्छा, त्रेता में भी राम राज्य था जिसकी महिमा है बड़ी भारी. राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है. देखो कितनी महिमा है. When it was the Golden Age, it was the time of the Sun Dynasty kingdom, and the Silver Age is the kingdom of Rama. There is great praise of the kingdom of Rama, the one who is the great king, the one who is remembered and praised highly, a time when his subjects were also praised. जब त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की और ही महिमा है, इसलिए उनको ही स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं. और भारत ही वैकुंठ था, स्वर्ग था. When the Silver Age is praised so much, the praise of the Golden Age is even greater, and that is why it is called the Golden Age, it is called heaven, it is called paradise. बरोबर भारत में थोड़ी जीवात्माएं थी जो पवित्र थी. अच्छा, और सभी आत्माएं सभी धर्मों की वो सभी निर्वाण धाम में थी. समझा नहीं? उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. At that time in Bharat, there were few human beings that were pure, and all other souls at that time existed in the land of Nirvana. The souls of all religions were in Paramdham. तो अभी आत्माएं क्या है
पिता परमात्मा क्या है कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है बिल्कुल ही. That is called the incorporeal world. But you see, no soul knows what the soul is or what the Supreme Soul is. ये आत्माएं तो है, ये बिंदी बाबा ने कल भी समझा ना, ये छोटी सी बिल्कुल के बीच में रहते, छोटी सी, उनमें कितना पार्ट है. देखो 84 जन्म का बाबा ने कल भी समझाया कि बच्चे. The soul is so tiny. It resides at the center of the forehead, and it has the part of 84 births recorded within it. ये जो आत्मा है, ये 84 जन्म, मनुष्य तो कहते हैं 84 लाख जन्म, तो ऐसे तो हो नहीं सकते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म में फिर कल्प कल्पांतर फिरते रहते हैं. Baba explained yesterday also that the soul has the part of 84 births. Human beings say that the soul takes 8.4 million births, but it isn't possible for the soul to keep going round the cycle, playing the part of 8.4 million births. 84 लाख तो होते ही नहीं है जन्म का भी, मनुष्य का 84 का चक्कर, तो भी सभी मनुष्यों का तो नहीं होगा ना बच्चे. It is the cycle of 84 births, not that of 8.4 million births. And even then, not all souls have the part of 84 births, child. नहीं, सिर्फ जो पहले आते हैं भारत में वही पीछे में होते हैं. ठीक है ना बच्चे, जो पहले थे सो पीछे में पड़ गए, अभी जो पीछे में है सो पहले जाएंगे. जब पहले जाएंगे तो पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है. And so even that doesn't apply to all souls, child. Those who were at the beginning are at the end, and those who are at the end will be at the beginning, and then those who come at the very end will be in the land of nirvana. तो ये नॉलेज तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं ना, क्योंकि ज्ञान का सागर वो एक ही है, उसको ही कहा जाते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी. It's the Father who sits and explains all this. He is the one who is called the World Almighty Authority. ये अथॉरिटी क्यों कहा जाते हैं? वो कहते हैं मैं आय कर करके ब्रह्मा द्वारा ये वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, ये गीता वगैरह का सार समझाता हूँ. Why is he called the authority? He says, I come and explain the essence of all the Vedas and the scriptures and the Gita, all of them. तो समझाते हैं कि ये सभी भक्ति मार्ग के, ये कर्म कांड के ये सामग्री है, शास्त्र है. He says that these are all the scriptures that belong to the path of bhakti. They are the paraphernalia of the path of bhakti. ये बनाए हुए हैं, समझे नहीं? क्योंकि मैं जब आए पतित पावन बनाया, कैसे बनाया वो तो कोई शास्त्र में लिखा नहीं हुआ है. It is not written in any scripture that I came and purified everyone. This is explained. मैंने कैसे आकर करके ये यज्ञ रचा, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ. I came and created a sacrificial fire. This is called the sacrificial fire in which the horse is sacrificed. It is called the sacrificial fire of the knowledge of Rudra. कोई कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाते हैं ना बच्ची, इसको कहा जाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ. रुद्र कहा जाते हैं शिव को, जिसमें क्या करना होते हैं. This is called the sacrificial fire of the knowledge of Rudra. This is not called the sacrificial fire of Krishna. This is called the Rudra Gyan Yagya. Rudra is called Shiva. कि स्वाहा होना होते हैं, ये सरेंडर होना होता है बाप को. What has to happen here? One has to sacrifice. That is, one has to surrender the self to the Father. देह सहित है, बाप कहते हैं बच्चे देह सहित है, कि जो भी तुम्हारे हैं मित्र संबंधी गुरु गोसाई काका बाबा चाचा, इन सबको अभी भूल जाओ. And Baba says that you have to forget everyone, including the consciousness of your own body, all your friends and relatives, your uncles, your gurus, everyone has to be forgotten. अभी सिर्फ अपने एक बाप को याद करो, उसको कहा जाता है सर्वधारी मान परित्याग. यानी जो भी तुम्हारा धर्म है, मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, वो क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, टीरा हूँ, ये बच्चे सभी देह के धर्म है. Forget everything.
Forget everything that is related to the body. Forget the religions of the body. Whether you are a guru or a sannyasi or you belong to the Hindu, Christian or any other religion, these are religions of the body. All of them must be forgotten. ये सब कुछ छोड़ दो अभी। माम एकम, देखो कौन कहते हैं माम एकम, मुझ अपने बाप को, तो आएंगे तो जरूर कोई शरीर तो लेंगे नहीं। You have to forget all of them and remember me alone. He comes, and when he comes, he has to take a body. तो आते हैं और कहते हैं मैं आकर के एक साधारण शरीर लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। He comes and he says, I adopt an ordinary body, body of the one who doesn't know his own births. हम कितने जन्म लिए हैं तो बताते हैं कि हम तुमको बताते हैं हे बच्चों, फिर ऐसे कहेंगे ना बच्चे, तो किसके तन में बैठ करके बात करें, पता मुझे कि प्रकृति का आधार लेना पड़ते हैं। He says, I come and explain. Children, I too have to come and take the support of matter. तो मैं आय कर करके इस तन द्वारा तुम बच्चों को सारे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताता हूँ। I come and take the support of this body and explain the essence of the beginning, the middle and the end of the entire world cycle. जिस योग, देखो प्राचीन योग भारत का बड़ा मशहूर है, नामी ग्रामी है, विलायत में भी बहुत है। भारत का प्राचीन यानी पुराने से पुराना, तो पुराने से पुराना तो बराबर भारत है नहीं, पुराने से पुराना। The ancient yoga of Bharat is praised and it's remembered. It's praised abroad as well, and the ancient means the oldest yoga of all. भारतीय नया था, भारतीय अभी पुराना बना है, तो जरूर भारत को नया बनाया था, उसको प्राचीन कैसे बनाया था, योग और ज्ञान से। Bharat was old and it had to be made new again. And how has it been made new? It has been made new with Gyan and Yoga. योग माना मेरे को याद करना, इसको कहा जाता है मन मना भाव। Yoga means to remember me. This is called Man Mana Bhav. अपने निराकार बाबा से जो सर्व का बाप है, सर्व का बाप है, न कि सर्वव्यापी है, सर्व का बाप है। Remember me alone. Don't remember anyone else. I am the father of all. I am the father of all, but I am not omnipresent. कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, नहीं शिवाय अन्नम है, तो सभी कहते हैं बरोबर, ऊंचे से ऊंचा है भी भगवत, उनकी सारी महिमा है बच्ची। He says, I am your father. I am the one who is the highest on high, and I am the one that is praised the most, child. नंबर 1 है उनकी महिमा, ऊंचे से ऊंचा भगवत। देखो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी गाए जाते हैं। That one is the one who is praised the most. He is the highest. He is also called the seed of the human world tree. सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं, भाई सत्य है, यानी वो जन्म मरण में नहीं आते और सच्चा आकर के बोलते हैं। He is called the truth, the conscient and the embodiment of bliss. He is called the truth because he comes and speaks the truth. बाकी जो भी मेरे लिए समझाते हैं वो सभी झूठ बोलते हैं। Everything that everyone else explains about me is all false. जो मुझे जानते ही नहीं है, तो मनुष्य होकर के अगर अपने परलौकिक बाप को न जाने तो जानवर मिसल हो गए। Why? Because they don't know me. If as human beings they don't know their father, they have become like animals. वो जानवर तो नहीं जानने की कोशिश कर, जानवर तो भक्ति नहीं करते हैं, नहीं भगवान से मिलने के लिए मनुष्य करते हैं। तो जो मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, अब उनसे मुझे फादर का ऑक्यूपेशन बताओ, अगर नहीं बता सकते तो फिर जानवर ही हो गया। Human beings pray to God, animals don't. Animals don't make the effort to know God. It is human beings that say, "Oh God, the Father." समझा ना बच्चे, गाते तो है नहीं, हे परम पिता परमात्मा, गाते तो नहीं, सभी भगत है, याद करते हैं यहाँ। They say, "Hey Supreme Father, the Supreme Soul." They remember.
All Bhagats remember. तो अगर कोई नहीं जानते हैं तो बाप बैठ के समझाते हैं कि अगर कोई बाप को ही नहीं जानते, बेहद के बाप, लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, जानवर भी जानते हैं. Everyone knows their Lokik father, even animals know the Lokik father. But if the human beings don't know their Paralokik father, the father sits and explains. और लौकिक बाप को अगर मनुष्य न जानते हैं तो फिर वो भी तो जानवरों के मिशन हुआ. If human beings don't know their Paralokik father, they too then have become like animals. तो देखो वो समझाते हैं कि देखो किस समय में ये जानवर है, हाँ? शेर है, नाग है, सर्प है, एक दो को दुख ही देते रहते हैं. He explains all these animals, whether it's a lion or a snake, they all cause sorrow to one another. एक दो को फिर कहते हैं और पिता परमात्मा से बेमुख भी करते हैं. तो देखो इस समय के लिए गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि. Human beings divorce one another from God. You see, this is why it has been said, at the time of destruction, intellects of human beings were divorced from God. तो गाया हुआ है ना बच्ची, जब विनाश हुआ था, अब हो रहा है फिर भी बाप आके कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि. किसकी? You see, child, it has been remembered, hasn't it, that at the time of destruction, the intellects of human beings were divorced. And so, whose intellects were they that were divorced? तीन सेनाएं खड़ी है, एक यादवों की, यूरोपवासियों की, जिन्होंने मूसल और इन्वेंट किया है विनाश के लिए. That time of destruction is now. There are three armies here. One, it's the army of the Yadavs, the residents of Europe, the ones who invented the missiles. अच्छा, दूसरे है भारत के, वो कौरव और पांडव है. देखो कौरव और पांडव है, अब भाई, तो देखो तुम भाई हो नहीं आपस में. The others are in Bharat, the Kaurav and the Pandav army. The Kauravs and the Pandavs are brothers. You are brothers, are you not? तुम पांडव हो तो वो कौरव है, कांग्रेस है. देखो तो दो भाई हो नहीं आपस में. अभी तुम्हारी भी प्रीत बुद्धि है बाप से, क्योंकि बाप ने आकर के तुमको अपना परिचय दिया है. You are brothers amongst yourselves, aren't you? You are the Pandavs because you have a loving intellect. The Father has come and has given you his introduction. तो गाए जाते हैं नहीं, वो तो कहते हैं सर्वव्यापी है, तो प्रीत हो नहीं सकती है. किसको याद करे जब सर्वव्यापी है, किसको याद करे? They say that he is omnipresent. But if he is omnipresent, then who is it that must be remembered? तो याद नहीं है, योग नहीं है, याद नहीं है, तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विनाश को पाते हैं. They don't have yoga, they don't have remembrance. And that is why it is said, at the time of destruction, their intellect was divorced from God. अच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर कौरवों की, वो भी विनाश को पाते हैं. फिर विनाश काले प्रीत बुद्धि, वो विजय पाते हैं. At the time of destruction, an intellect that is divorced from God, and at the time of destruction, an intellect that is loving with God. तो पांडव विजय पाते हैं, देखो है नहीं. तो वो फिर वही तो समय है नहीं, इसको ही कहा जाता है गीता का एपिसोड. यानी फिर से गीता का भगवान, अब गीता का भगवान कौन? This is that same period. It's the Pandavas that become victorious. The God of the Gita has been mentioned. But then, who is the God of the Gita? मनुष्य कह देता है मनुष्य कृष्ण, नहीं बाप कहते हैं कि मैं हूँ बच्चे, ज्ञान का सागर मैं हूँ नहीं. Human beings say it's a human being, Krishna. But the father says, no child, it's me. I am the ocean of knowledge. कृष्ण तो नहीं है ना, नहीं, ज्ञान का सागर मैं हूँ, पतित पावन मैं हूँ, कोई कृष्ण थोड़ी है. तो कृष्ण भगवान हो वाच्य तो हो नहीं सकती है नहीं. वहां लिखा हो भगवान हो वाच्य. भगवान तो कोई कृष्ण को नहीं कह सकेंगे बच्चे, किसको कहेंगे कि भगवान तो एक ही होते हैं. It is not Krishna, it is me. I am the ocean of knowledge. I am the purifier. I am the one who speaks the Gita. It cannot be Krishna who speaks the Gita. Krishna is a human being, and a human being cannot be called God. जिसको पतित पावन कहा जाते हैं,
भगवान को कृष्ण कोई नहीं मानेंगे, मुसलमान मानेंगे नहीं. God is called the purifier, and He's the one who is called God. Would Muslims accept Krishna to be God? No. और पिता परमात्मा को जिसको अल्लाह कहते हैं, अल्लाह मियाँ, समझे नहीं, वो फादर कहते हैं, गॉड फादर, जो पिता परमात्मा कहते हैं, तो और कोई को कहेंगे? The Supreme Father, the Supreme Soul, is the one who is called Allah. He is called God the Father. And can anyone else be called that except the Supreme Father, the Supreme Soul? न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, क्योंकि इनसे भी ऊंचा वो है. Brahma, Vishnu or Shankar cannot be called this, because that one is even higher than them. बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः, तुम्हें माता पिता. देखो, तुम माता पिता तो जरूर आय कर करके सबकी सदगति वो करते हैं. Salutations to Shiva. You are the mother and father. He is the one who comes and grants salvation to all. तो सबको इस दुख से लिबरेट कर सुख को वो करते हैं, तो होना है न बरोबर, क्योंकि लड़ाई सामने खड़ी है. He liberates everyone from sorrow and he takes them, and this has to happen. Why? Because the war is standing ahead of you. तुम बच्चों को नॉलेज फिर से मिल रही है और बार बार कहते रहते हैं, देखो तुम यहाँ बैठे रहते हो तो भी भले देखते हो, यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बाप के पास. शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं. You children are learning again, and you recognize that it is Shiv Baba who is teaching you again. समझा नहीं? अभी ऐसे तो नहीं कोई तुमको साधु पढ़ाते हैं या विद्वान पढ़ाते हैं या कोई वेद पढ़ाते हैं या शास्त्र पढ़ाते हैं. नहीं, वो तो कह देते हैं कि बच्चे इन सब जो भी भक्ति मार्ग के ये है शास्त्र, इन सब को भूल जाओ. Your intellect goes up above to him. No guru or a sadhu is teaching you, nor are you learning from any Vedas or any scriptures. It's the Father who sits here and teaches you. मर जाओ, यानी देह सहित देह के अभिमान को छोड़ दो, देही अभिमानी बनो और अपने बाप से अभी सुनो. He says you have to die. That is, die from the consciousness of your body and listen to the Father. तो क्या सुनो? वही सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान और योग. तो ये वही फिर कल पहले वाला जिसको प्राचीन योग कहा जाते हैं, वो फिर भी आकर के बाप से कह रहे, तो कृष्ण ने थोड़ी बैठ करके योग और ज्ञान सुने. You must sit and listen. Listen to what? That same thing, that ancient yoga of Bharat. It's the Father who comes and teaches you this. Krishna doesn't come and teach you this. कृष्ण तो एक ही बार सतयुग में देखेगा, फिर जब पुनः जन्म लेगा तो नाम रूप फिर जाएगा. Krishna will only exist in the golden age. When he takes rebirth, his name and form will have changed. नाम रूप देश काल फिर जाते हैं. तो गीता कोई कृष्ण ने तो बताई नहीं है. His everything changes. His name, form, time period, everything. And Krishna didn't speak the Gita. सुनाई भी नहीं है. सुनाई है परमपिता परमात्मा ने. अभी वहां बैठ करके कहते हैं कि व्यास ने बैठ करके लिखा है, ये बनाई है, व्यास को भगवान कहते हैं. He didn't relate the Gita either. It's the Supreme Father, the Supreme Soul, who sits and relates the Gita. They say Vyas wrote the Gita, that they have given the title of God to Vyas. तो क्या व्यास को ये सब बातें कैसे बैठ करके बनाई? पहले ही नंबर 1 में भूल कर दी कि भगवान और वाच्य. अभी भगवान तो कोई भी मनुष्य को तो नहीं कोई कहेंगे नहीं. They have created these things. They say that God speaks, but a human being cannot be God who would speak. मनुष्य को दैवी गुणों वाले ये भारतवासी थे, जिनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता दैवी गुणों वाले. अभी है आसुरी गुणों वाले. Human beings in Bharat were the ones with divine qualities. They were the deities. Now there are human beings with devilish traits. वो था राम राज्य, ये है रावण राज्य. तो रावण राज्य में तो सभी ही पतित ठहरे ना बच्ची. That was the kingdom of Rama, and this is the kingdom of Ravan. And in the kingdom of Ravan, all are impure. Are they not, child? क्यों पतित ठहरे?
खास करके बाप कहते हैं अरे अपने बाप को, जिसको वो गॉड फादर कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, कण कण में है, फलाने फलाने में, तो कितना पाप हुआ। Why are they impure? Because they say that their father is omnipresent, that he's in everything. He's in the cats and dogs and in every speck, every particle. You see, this is such defamation, child. तो खुद भी पापात्मा बनते हैं, जिनको सुनाते हैं उनको भी पापात्मा बनाते हैं। So this is such a great sin. They themselves become sinful souls, and the ones that they relate this to also become sinful souls. ऐसे बनते बनाते सारी दुनिया पतित बन गई है। They become this and they make others this, and in doing this the whole world has become impure. तो बाप आकर के समझाते हैं ये है ड्रामा, बनी बनाई है, तो तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है। Baba comes and explains, this is the drama, that which is predestined is taking place. फिर पावन से पतित बनना है। सृष्टि तो ऐसी होती है ना बच्ची, सत्य त्रेता द्वापर कल है युग पे संगम युग, फिर सतयुग तो आना ही है ना, तो सतयुग आना है तो सतयुग में फिर भी देवी देवताओं का राज्य। This is the drama. There is the golden, silver, copper and iron age. And then the Satyug has to come again. And in Satyug there was the kingdom of the deities again. वही फिर राजयोग और ज्ञान फिर से तुम सुन रहे हो, किसके द्वारा? वेद के बाप ये भी सुन रहे हैं। You are learning that Raj Yoga once again. And through whom? Through the unlimited Father. सुनाई तो पढ़ा हुआ तो बहुत है नहीं शास्त्र, पर वो तो भक्ति हो गई ना, वो सभी भक्ति कांड, इसको अंदर भक्ति कांड। He explains through this one, and this one is also listening. He has studied a lot, but all of that is bhakti. ये ताली बजाना, ये करना, वो करना, बहुत धक्का खाना है, इसलिए कहा जाते हैं यह है ब्रह्मा की रात। All of that is the activity of bhakti, wandering around and stumbling around and singing. All of that is bhakti. क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ब्रह्मा की रात, धक्का खाते ही रहते हैं, खाते रहते ही जन्म जन्मांतर। Why it is called stumbling around is because it's the night of Brahma, and in the activity of bhakti it's just wandering around, stumbling around. अभी कितना दफा जन्म जन्मांतर गंगा में स्नान किया होगा, तो क्या पतित पावनी गंगा ठहरी क्या? You must have been bathing in the Ganges for birth after birth. Does that mean the Ganges is the purifier? नहीं, नदियाँ तो सब जगह में है, वो तो सागर से निकलती है, सब जगह में पानी की नदियाँ हैं। The rivers exist everywhere, and they are the rivers of water. तो यहाँ भारत में कोई पतित पावनी गंगा नहीं, ये मनुष्य है। देखो गंगा पर जाएंगे ना, तो वहाँ भी देवताओं का चित्र है, उसका भी नाम गंगा रख देते हैं। If you go to the Ganges, you will see the images of the deities, and those too they called Ganga. अभी गंगा सच ये या ये, समझे? अभी वो जो देवताओं का चित्र रखते हैं वो कोई गंगा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान सुनकर देवता बने, मनुष्य से देवता बने। They call the deities Ganga, but they are not the Ganges. In fact, they listened to the knowledge and they became deities. नॉलेज सुन करके मनुष्य से देवता गाया जाते हैं, मनुष्य से देवता किया किसने? It has been remembered that human beings were changed into deities. Who did this? अब ये किसको पता नहीं है, गाते थे मनुष्य को देवता किए, करतन लाजीवार। ये भी तो कोई ग्रंथ में अक्षर है, तो बाबर के समझाते हैं कि बच्चे मनुष्य कोई भी धर्म को तो जानते ही नहीं है। Baba sits and explains that human beings don't know anything about religions, even though they say that human beings were changed into deities. But who did this? पढ़ते हैं शास्त्र ढेर के ढेर है। अभी धर्म शास्त्र किसको कहा जाते हैं? There are so many scriptures, but what is it that is called a religious scripture? धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे द्वारा जो धर्म स्थापन किया, जैसे क्राइस्ट का भाई धर्म शास्त्र भाई बाइबल। अभी वो बाइबल को किसको पढ़ने का हक है? उस बाइबल को पढ़ने का हक ही है क्रिश्चियन को। The Christian religion has the scripture of the Bible, and they say that it's the Bible of Christ.
But who has the right to study the Bible? It is the Christians who study the Bible. सब कोई अपने शास्त्र को जानते हैं, क्योंकि अभी कोई भी जाएगा मुसलमान जाके पढ़ेगा बाइबल समझेगा कुछ भी नहीं. Everyone studies their own scripture. For instance, if a Muslim were to go and study the Bible, he won't understand anything. तो हर एक धर्म वाले को अपना शास्त्र चाहिए. तो बाबर के समझाते हैं बच्चे धर्म के शास्त्र किसको कहा जाते हैं. अच्छा, So everyone needs their own religious scripture. Baba sits and explains what a religious scripture is. अभी पहले पहले सर्व शास्त्रमय श्रोमणि भगवत गीता. First of all, it's the Gita, that is the jewel of all the scriptures spoken by the highest on high God. लोग गाए जाते हैं माता, फिर उनको गीता माता भी कहे जाते हैं. अच्छा, उसका पिता, उसको रचने वाला कौन? That is called the mother, the Gita, the mother. But who is the father that created it? तो रचने वाला फिर भी भगवान हुआ ना. श्री मत श्रेष्ठ मत देने वाला भगवान. It is God who created it. It is God who gives the most elevated instructions. तो श्री मत भगवत गीता यानी भगवान ने ये गीता को जन्म दिया, जैसे जैसे बाइबल को जन्म क्राइस्ट ने दिया. It is called Srimad Bhagavad Gita. It is been given birth by God, just like Christ gave birth to the Bible. ऐसे है ना बच्चे, मुसलमानों के ये बाइबल का कुरान को जन्म मुसलमान के इब्राहिम ने दिया, वो ये हुसैन ने दिया. ये जो मुसलमानों का होते हैं जिनका वो निकालते हैं जलूस पटका लगा करके. Who created the Quran? It is, they say it is Abraham, Hussein. They have a procession for the Quran also. तो हर एक धर्म का एक शास्त्र. तो सबसे पहले है धर्म शास्त्र गीता. Every religion has its own scripture, but first of all, the Gita is the religious scripture. सर्व शास्त्र में श्रोमणी गीता किसने गाई? भगवान ने गाई. Who sung the Gita, that is the jewel amongst all the scriptures? It was sung by God. अभी भगवान तो निराकार कोई कहेंगे. अभी वो भगवान कैसे गावे? निराकार भगवान का नाम भी है, शिव भी कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं. It is God, the incorporeal, who sung the Gita. But how did he sing it? He is called Shiva, he is called Rudra also. बरोबर शिवरात्रि गाते हैं और भारत में ही गाते हैं उनका. ठीक है ना बच्चे? They definitely sing about Shivratri, and it is in Bharat that they remember this. क्योंकि पहला पहला मंदिर वो शिव का सोमनाथ का, सोमनाथ भी शिव को कहा जाते हैं क्योंकि शिव ने सोमरस पिलाई, ज्ञान दिया, इसलिए उसका नाम रख दिया है सोमनाथ. The first temple that was built was the temple to Somnath, and Shiva is called Somnath, the one who is the Lord of nectar, because first of all he gave nectar to drink. तो देखो पहले मंदिर यहाँ भारत में है नहीं, किसका मंदिर है? जरूर कहेंगे हम परमपिता परमात्मा का मंदिर है. The first temple is built here in Bharat. Whose temple is it? We will definitely say that it's the temple to the Supreme Father, the Supreme Soul. ठीक है ना बच्चे? ऊंचे से ऊंचे का मंदिर है, तो कितना आलीशान मंदिर बना हुआ था. It was the temple of the one who is the highest on high. It was such a glorious temple that was built. हाँ? कितने धन थे यहाँ, अभी क्या है? क्यों पतित है? There was so much wealth at that time. But what's there left now? Why? Because all are तो impure. जब बाप को जानते हैं और उन द्वारा पावन बनते हैं तो देखो ऐसे विश्व का मालिक बन जाते. When you know the Father and when you become pure through Him, then you see you become the masters of the world. बाप को जानने से विश्व का मालिक आधा काल के लिए, बाप को भूल जाने से ये कंगाल बन जाते हैं. बिल्कुल बस एक ही बात होती है. You see, it's only the one thing. When you know the Father, you become the masters of the world. When you forget the Father, you become poverty-stricken. है नहीं? बस बाप को याद कर मिलना माना ही बाप से वर्षा लेना. To remember the Father and to meet Him
means to claim the inheritance from the Father. कितने का वर्षा लेना? 21 जन्म का पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का वर्षा. You claim the inheritance of the purity, peace, happiness and prosperity. देखो इसको बेहद का वर्षा कहा जाता है ना बच्चे. अभी तुम ये आते हो, किस लिए आते हो? परमपिता परमात्मा से जो भी मनुष्य है ये क्यों आते हैं यहाँ? परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा लेने. You come to claim the inheritance of the unlimited. Why do you come here? You come to claim this inheritance from the Father for 21 births. क्योंकि बेहद का बाप है. हद के बाप से हद का वर्षा, हर एक चीज, हद का सुख. भले गुरु हो, गुसाई हो, टीचर हो, कोई भी हो, तो हद का वर्षा मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ते हैं. From the unlimited Father, you receive everything that is unlimited. From the limited, you receive that which is limited. From the gurus and everyone else, only give you that which is limited. फिर दूसरा बाप, दूसरी माँ, दूसरा टीचर, दूसरा गुरु करना पड़ता है ना बच्चे. पुनर्जन्म लिया, नया बाप, नई माँ, सब नया मिलेगा. When you take rebirth, then everyone will be new again for you. A new father, a new mother, a new teacher, a new guru. All relationships will be new. तो हुआ नहीं हद का माँ बाप. अब इस समय में तुमको बेहद का बाप मिलता है जिसको सभी याद करते हैं. देखो कितनी महिमा है उनकी. So that's all limited, isn't it? But at this time you receive the unlimited Father. You see, everyone remembers him so much. शिवाय नमः. उनकी महिमा बिल्कुल ही अलग है. मनुष्य सृष्टि का बीज है, सत्य है, सच्चित आनंद है. फिर कहा जाता है ज्ञान का सागर है. किसमें? He is the one that is remembered by all. He is the seed of the human world tree. He is the truth, the living being and the embodiment of bliss. उस परमपिता परमात्मा में जो जिसको परम आत्मा कहा जाते हैं, परम आत्मा का लफ्ज मिल करके होता है परमात्मा. अभी उनकी महिमा कितनी भारी है. He is praised so much. He is the Supreme Father, the Supreme Soul. ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है. तो बाप ठहरा नहीं. He is the ocean of peace, the ocean of happiness, the ocean of bliss, the ocean of knowledge, and so he is the Father, is he not? तो किस लिए है? जरूर इनहेरिटेंस बच्चों को देने के लिए. तो देखो अभी तुमको दे रहे हैं इनहेरिटेंस, बर्ब तुम सो देवता फिर बनते हो. He is that in order to give the children the inheritance, and definitely you become deities now. फिर देखो देवताओं की महिमा कौन सी है? सर्वगुण संपन्न, सोहा कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी धर्म. You see the praise of the deities. The deities are known as those who are complete with all divine virtues, 16 celestial degrees pure, the ones who stay within the highest code of conduct, the ones whose highest religion is non-violence. क्यों वहाँ हिंसा नहीं होती थी बच्ची? क्यों? अरे राम राजी नहीं है ना वहाँ. वहाँ ये जो 5 विकार की राम राज है नहीं. There is no violence there. Why? Because it is not the kingdom of Ravan. The 5 vices don't exist there. अभी एक इसको मालूम ही नहीं है. शास्त्रों में बकवाद लिख दी. श्री कृष्ण को 108 रानी थी. अभी श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न स्वर बालक सो भी कुछ पता नहीं उनको कि ये श्री कृष्ण वही फिर नारायण बनते हैं, राधे से इनका स्वयंवर होते हैं और इनको अलग कर दिया है. They don't know anything. They have written all sorts of things in the scriptures. They say that Krishna had 108 queens. They have written these things about Krishna. They don't know. Krishna is the childhood stage of Narayan, and when he grows older, they become Lakshmi and Narayan. और इनको प्यार करते हैं बहुत. समझे नहीं? एक तरफ में प्यार करते हैं बहुत और कहते हैं भाई गीता का भगवान, दूसरे तरफ में कह देते हैं 108 रानी थी. They have a lot of love for him. On the one hand, they have a lot of love. On the other hand, they say that he had 108 queens. ये फलानी थी, ये थी, सर्प ने दशा फलाना.
जो तो कोई शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है नहीं। He had this and he had that and he was bitten by the snake. These are the things written in the scriptures. तो झूठ लिखी हुई है ना बच्ची, तब तो गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। So these are false things that are written, aren't they, child? And this is why it is said that the body is false, the Maya is false, the whole world is false. झूठा सबसे बड़े से बड़ी झूठ कौन सी है जो मनुष्य को दुर्गति के प्राप्त? भगवान को बाप को कह दिया, सर्वव्यापी कुत्ते में, बिल्ले में, फलाने में, तीर में, पत्थर पत्थर में, कण कण में, और नाटक बनाते हैं फिर। What is the greatest falsehood of all? They have said that the Supreme Father is in everything. He is in the cats and dogs and in every particle, every aspect. God exists. कण कण में भगवान का नाटक सिद्ध करके बताते हैं। They prove that every particle is an act of God. तो फिर जब कण कण भगवान, तो योग किसके साथ लगे? बुद्धि का योग। योग जो प्राचीन गाया जाते हैं, ज्ञान और योग, वो किसने तो नहीं ना बच्चे नहीं। If God is in every particle, who are they having yoga with? The ancient Gyan and Yoga have been remembered. कृष्ण तो इस समय में अंतिम 84 जन्म के अंत में है। Krishna at this time is in the last of his 84 births. पुनर्जन्म लेते लेते अंत में है, तो कौन बताएगा? ये तो बाप का काम है ना बच्ची, जिसके लिए भूल गए सब जगह। He has continued to take rebirth and he is in his last birth now. But who is going to relate this? It has to be the Father. सब जो भी है मनुष्य, ये कहाँ से उनको मालूम पड़ा? विलायत वाले भी कहते हैं भाई सर्वव्यापी है, वो क्या ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी, भाई क्या कहते हैं तीसरा? Abroad also they talk about omnipresent. And then they say that he's omniscient, he's omni this, and what is the third thing they say? Omni what? यानी वो है, हाजुर और नाजुर है, कसम भी उठाते हैं। अभी कसम उठाते हैं देखो झूठा। They say that he is present everywhere and they take a vow with that in mind. And so the vow they take is also false. गवर्नमेंट से कितनी लिखा पड़ी हुई है, अरे भाई तुम लोग सब झूठे कसम उठाते हो, इस कसम को फिराओ, गीता लेते हो हाथ में। So much correspondence has taken place with the government telling them that you take a false vow when you take the Gita in your hand. समझे नहीं? और फिर कह देते हैं हाथ में गीता, देखो गांधी जी के भी हाथ में गीता थी, और कह देते थे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। They take Gita in the hand. Gandhi also took the Gita in his hand and he said that Rama was the one who purified. This is the Rama that belongs to Sita. राम राज्य के आगे तो सूर्यवंशी राज था, वो भूल गए हैं। They have forgotten that before the kingdom of Rama was the Sun Dynasty kingdom. राम राज्य को आगे कर 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 कृष्ण को फिर द्वापर में ले आए। दो कितनी भूले की है मनुष्य। They have brought forward the kingdom of Rama and have brought Krishna into the Copper Age. You see how many mistakes human beings have made. मनुष्यों ने तो बाप बैठ के समझाते हैं बच्चों को, नहीं बेहद का बाप तो जरूर वो समझाए कैसे। अच्छा शिव जयंती गाते तो है नहीं, शिवाय नमः, फिर आकर के शरीर बिगड़ और बोले कैसे, ज्ञान कैसे दे? Baba comes and explains to the children. He comes into the body. They say Shivaya Nama. So how does he come and give knowledge? तो खुद कहते हैं कि मैं किसको देता हूँ? जो पहला था श्री लक्ष्मी नारायण, वो 84 जन्म भोग करके अंत में, जो अंत में है मैं उनके शरीर में प्रवेश कर, फिर वो आद का फिर वही जाकर के बनते हैं। He explains that he enters the body of the one who was Lakshmi and Narayan, and he is now in his last of many births after having experienced many births, and he explains through that one. डायनेस्टी उसको कहते हैं, सूर्यवंशी डायनेस्टी और चंद्रवंशी डायनेस्टी। तो समझाया जाते हैं ना, बाप आकर के बाप खुद कहते हैं मैं ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा द्वारा, देखो ये समझने की बात है नहीं, मैं आता हूँ पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाता हूँ ब्रह्मा मुख द्वारा। I come and change Shudras and make them into Brahmins first of all through the mouth of Brahma. They speak about the Sun dynasty
and the Moon dynasty. इसलिए मैं ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। I enter only the body of Brahma. I adopt Brahma. उसका नाम पहले कोई ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि वो जब संन्यास होते हैं ना बच्चे तो नाम बदलते हैं। His name was not Brahma previously. When someone takes sannyas, they change their name. सन्यासी सब जो भी गृहस्थी नाम है वो फरा देते हैं। तो हम लोग भी तो गृहस्थी तो है नहीं, परंतु संन्यास कहते हैं, और ये है बेहद का संन्यास। All the sannyasis, etc., they change their name. We don't have renunciation, we don't have sannyas, but his name has also been changed. वो है हद का संन्यास, समझे नहीं? हठ योग वो हद का घर बार छोड़ करके जाके जंगल में रहते हैं। तुम्हारा है सारी इस पुरानी दुनिया का संन्यास। They renounce their home and everything and go into the jungles. But you renounce the whole of the old world. समझा नहीं? देह सहित सब कुछ ये विनाश होने वाला है और हमको वापस जाना है। Everything is going to be destroyed, including your own body, and we then have to return. इसलिए जो भी पुरानी दुनिया है इसको तुम बुद्धि से त्याग करते हो। That's why this entire old world is renounced by the intellect. रहते हुए घर और व्यवहार में गृहस्थ में तो मेहनत हुई ना बची। गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र बनना कमल फूल के समान, तो मेहनत है इसमें। You live in the household and become like a lotus flower. It is this that requires effort. वो सन्यासी नहीं रह सकते हैं, इसलिए चले जाते हैं, कह देते हैं कि ये जो है नहीं माताएं ये नांगन है। Those sannyasis are not able to do this, and that's why they say that a woman is like a serpent. ये नरक का द्वार है। अभी नरक का द्वार अगर ये है तो मनुष्य भी नरक का द्वार हुआ ना बच्चे। That she is the gateway to hell. If a woman is that, then surely a man must be that too. तो बराबर है ही नरकवासी, तो नरक में ही तो रहते हैं नहीं बच्चे। Of course they are the residents of hell, and so they live in hell, child. अभी जंगल में जाके रहने से कोई स्वर्गवासी हो गया क्या? नहीं। Just because he goes and lives in the jungle, he doesn't become a resident of heaven. No. फिर भी नरक तो है नहीं सारी दुनिया, कोई जंगल तो स्वर्ग नहीं बनते हैं नहीं। So the whole world is still hell. Jungles don't become heaven. तो तुम बच्चे फिर ये जो भी है जंगल, एक आ जाता है इसको कांटों का जंगल, समझा नहीं? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, एक दो को काटते रहते हैं। सबसे बहुत कौन काटते हैं, दुख कौन देते हैं? ये विद्वान और सन्यासी। This is the forest of thorns. People keep biting one another. They keep causing sorrow to one another. Who is it that bites the most? It's these scholars and pundits that say that God is omnipresent. जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी बुद्धि योग किसका भी नहीं हो, किसका भी बुद्धि योग है नहीं, कोई की भी प्रीत नहीं है बाप से, तो गाया हुआ है ना, विनाश काले, विनाश तो सामने खड़े हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। It is said that at the time of destruction, some intellects were divorced from God, and so those were destroyed. And there were those whose intellects were loving with God at that time, and they became victorious. देखो अक्षर है ना, यानी परमपिता परमात्मा में प्रीत न संशय, तो संशय बुद्धि बाप में विनश्यन्ति, यानी विनाश हो जाते हैं। फिर जिनकी प्रीत बुद्धि है तो तुम तो उनको याद करते हो, तुम मनुष्य को तो कोई याद करते ही नहीं हो, इनको भी नहीं याद करते हो। An intellect that's divorced from God is destroyed, and an intellect that remembers God, the way in which you remember God, you don't remember anybody else. You only remember that one. कोई भी गुरु को, गोसाई को, बाप को, माँ को तुम देखते हुए, रहते हुए, तुम कमल फूल के समान तो मेहनत है ना बच्ची। You don't remember anyone else, mother, father, gurus or scholars. You see them, but you don't remember them. So you're like a lotus flower. Are you not, child? उसमें मेहनत है हद के गया वो संन्यास में, क्योंकि पवित्र बनते हैं, तो पवित्र बनते हैं वो भी तो अच्छा है। This requires effort. The sannyasis become pure, and it is good that they become pure. अगर ये संन्यास धर्म न होता
तो भारत एकदम जल मरता। तो इसलिए ये धर्म जो संन्यास का है वो पवित्र है नहीं बच्चे, तो वो जैसे कि इस बात को थमाते हैं। If it wasn't for the sannyas religion, then the Bharat would have been completely burnt away. It is the purity of the sannyasis that sustains Bharat. जैसे आधा होता है समय तो मरम्मत होती है, ओवरऑल सृष्टि, ये वेद की बात है नहीं, तो ओवरऑल के लिए ये संन्यास धर्म भारत में ही है। After half the period, repairing takes place. It is as if an overhaul takes place. This happens for Bharat. इतने सन्यासी और कोई जगह में नहीं होते हैं। हाँ, ये नागा वगैरह जब होते हैं ना, ये कुंभ का मेला, नदियों का, सागर का, बहुत आते हैं सन्यासी। हाँ? These sannyasis don't exist anywhere else. There are many sannyasis. When the Kumbh Mela takes place, many sannyasis come at that time. लाखों के अंदाज में, बल्कि करोड़ों के अंदाज में है ये, तो ये पवित्र रहते हैं, ये भारत को थमाते हैं। There are hundreds of thousands of sannyasis. In fact, there are millions. And because they remain pure, they sustain Bharat. जैसे पुराने मकान को थमाया जाते हैं, पोची वगैरह लेकर के, तो इनकी पवित्रता के कारण भारत ये थमता है। ये ड्रामा में इनकी नींद है भारत, क्योंकि भारत इससे पवित्र और कोई बनते ही नहीं है। An old building is repaired and maintained after it's a little old by whitewashing it. In the same way, the sannyasis sustain Bharat. तो इसलिए भारत जब वाम मार्ग में जाते हैं, रावण राज शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये संन्यास धर्म शुरू हो जाता है। When Bharat falls onto the path of sin, at that time the sannyas religion begins. समझा नहीं? ये बात को थमाने के लिए, वो भी पहले सत्व प्रधान, अब सभी तम प्रधान, जो कह देते हैं सर्वव्यापी है। They sustain Bharat. In the beginning, they too were Sattva Pradhan. It is now that they say that God is omnipresent, and so they become Tamo Pradhan. तो सभी फादर्स हो गए, फादरहुड हो गया, ब्रदरहुड ही चला गया एकदम। जब ब्रदरहुड चला गया तो प्यार भी न रहा, तो देखो कितना लड़ते हैं आपस में एकदम। They speak about fatherhood when they speak of omnipresence, and so brotherhood has finished completely, and so there is no love remaining. तो देखो कितना लड़ते हैं आपस में एकदम। तो इसको कहा जाते हैं निर्धन के ऑर्फन्स। They fight amongst themselves, and so they don't belong to the Lord and Master, and so they become orphans. तो इस समय में सारी दुनिया ऑर्फन्स है। देखो कितनी लड़ाई आपस में, सब धर्म की एक दो में लड़ाई, यहाँ कितनी लड़ाई है सब। All have become like orphans. There's so much fighting and quarreling going on. People of different religions fight amongst themselves. सतयुग में फिर उसको कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी राजा रानी, महाराजा महारानी। सतयुग में महाराजा महारानी। In Satyug, there is the sovereignty. There is the kingdom of the emperor and empresses. सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी, क्योंकि दो कला कम है। In the golden age, it is the kingdom of emperor and empress. In the silver age, it is the king and queen, because there are 2 degrees less. पीछे पतित राजा रानी, जो पावन राजा रानी या महाराजा महारानी को पूजने वाले, ठीक है ना बच्चे। Afterwards, there are impure kings and queens. They are the ones who worship the pure kings and queens. लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं और सीताराम को पूजते हैं, सब जो भी है राजा है उनके पास मंदिर है। तो पतित पावन को पूजते हैं जो हो गए हैं। अच्छा, पीछे अब तो कोई राजा भी नहीं रहा, अभी तो पिजा पर राज। They worship the pure kings and queen. They worship Lakshmi and Narayan. They worship Rama and Sita, and all the kings have temples built. अच्छा, पीछे अब तो कोई राजा भी नहीं रहा, अभी तो पिजा पर राज। तो फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये फिर रिपीट होती है, फिर से वो राज स्थापन हो रहा है। In fact, there are no kings and queens left. Everyone has become impure. It is said that the history and geography of the world repeat. फिर से वो राज स्थापन हो रहा है,
फिर वो चक्र सृष्टि का बनेगा। That kingdom is being established again and the cycle will begin again. ये इतने आदमी का जो खाना भी नहीं है। There are so many people and there isn't sufficient food for them to eat. तो इसको कहा जाता है अंत और आद, तो इसको कहा जाता है कुंभ, तब बाप आते हैं। This is called the end and then there is the beginning. When these two come together, it is called the kumbh and this is when the Father comes. सबका सदगति दाता, सबको दुख से लिबरेट करने, सबको बताने में साधु नाम जिनका है नहीं, उनका भी उद्धार परित्राण करके मुझे आना पड़ते हैं। He comes and uplifts everyone and that means everything. Even the sages are uplifted. क्योंकि वो भी बेमुख है मेरे से, मेरे साथ कोई की प्रीत नहीं है, पिता के साथ कोई की प्रीत नहीं, जानी ही नहीं है एकदम। Because they too are divorced from me. No one has love for the Father at the moment. तो उनका भी उद्धार करने आता, उनका भी उद्धार हो जाएगा आगे चल करके। I come to uplift them too. As time goes on, they too will be uplifted. अच्छा टाइम हो गया है, अब भोग भी है। Acha, it's time now and today it's also Bhog. सामने खड़े हैं और मनुष्य कुंभकर्ण वाली आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। Human beings are sleeping in the devilish sleep of Kumbhakarna. क्यों? कि समझते हैं कलयुग अभी पूरा थोड़ी हुआ है, कलयुग तो अभी छोटा है, 40,000 बरस अभी चलेगा। Because they think that Kali Yuga hasn't come to an end yet, that there are still 40,000 years left to Kali Yuga. तो हुआ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि और फिर कुंभकर्ण के घोर अंधेरे में सोए हुए हैं। You see, this is what it means to be having an intellect that is divorced from God at the time of destruction, and people are also sleeping in the sleep of ignorance, the sleep of Kumbhakarna. जब आग लगती है तब जागते हैं, पर टू लेट हो जाते हैं। They awaken when the fire takes place, but then it's too late. तो इस भंभोर को आग तो लगनी है ना बच्ची, खत्म तो होने का है नहीं, तो देखो इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। You see, this haystack has to be set on fire, and this is why this is called the Rudra Gyan Yagya, the sacrificial fire of the knowledge of Rudra. इसमें ये जो भी है देश है, इसको आहा करना पड़ते हैं शरीर को। Everything has to be sacrificed in this, including your own body. अपन को आत्मा निश्चय करना पड़ते हैं, तो आत्मा को निश्चय करते 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 देह का भान मिट जाना है। You have to have the faith that you're a soul. As you continue to have the faith, as you continue to have the faith, then the consciousness of the body is finished. जो पिछाड़ी में अपने बाप को याद करे तो अंत मत्ते गत यानी परम धाम में पहुंच जाए, यानी स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम, और सत्य का स्वीट राजधानी। So that your final thoughts lead you to your destination, that is, you return to your home, to Paramdham, to your sweet home, and Satyug is called your sweet kingdom. बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं, शक्ल भी बंदर की और बंदर की और मनुष्य की एक जैसे होते हैं, मिलती जुलती, और उनको जानवर कहा जाते हैं। A monkey is said to have the most vices. Face might be like a human being, but their activities are like the activities of a monkey. तो तुम्हारे पास एक कथा भी है, एक जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था तो नाच बैठा था भगत, झांझ बजाने वाला, तो कहने लगा मेरे को लक्ष्मी वरेगी, तो उसने कहा अपने दिल रूपी दर्पण में अपना रूप तो देखो, समझा नहीं, ये आखाने बनाई है। There's a story you have about this. When the coronation of Lakshmi was taking place, Narad was sitting in the gathering, the one who plays musical instruments, and he asked, will Lakshmi marry me? And he was told, go and look at your face and see if your face is worthy to marry Lakshmi. तो जब देखा तो बंदर का रूप अपन को देखा, तो बोला बंदर का रूप जिसमें 5 विकार है, वो कोई लक्ष्मी को थोड़ी वरेंगे। And he saw that his face was like a monkey,
And so a face of a monkey can't possibly marry Lakshmi. तो भगतों में ये विकार तो है नहीं बच्ची, विकार है तब तो भगवान को याद करते हैं नहीं. So bhagats have the vices, and it's because they have the vices that they remember God. कि हमको पावन बनाओ, कैसे बनाओ, इन जैसे बनाओ. Make us pure like them. या तो मुक्ति, तो बच्ची सर्व की सद्गति और गति दाता एक. So child, it is only the one who grants salvation and liberation to all. पतित को कैसे पावन बना सकेंगे, हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर्व की सद्गति दाता एक, जिसको फिर कोई भी नहीं जानते सवाए तुम बच्चों के. An impure one cannot make another impure person pure. That is impossible. The one who grants salvation to all is only the one, and no one knows him. को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, कुछ में वो तो गाली देते हैं, तो विपरीत बुद्धि है ना बच्ची. They all say that he is omnipresent. In fact, they're insulting him when they say that. कोई मनुष्य किसको गाली देते हैं क्यों, कि विपरीत है उनसे प्यार नहीं है. That's known as having an intellect that is divorced. When someone insults someone, it's because that they don't have love. Their intellect is divorced from them. और तुम्हारा तो है एक से प्यार, दूसरा ना कोई. But you have love for only one. You have no one else. देहधारी से तुम्हारा बच्ची प्यार नहीं है भाई गृहस्थ में रहते हो, परंतु बुद्धि तुम्हारी वहां लगी हुई है और रहते हो पवित्र. Child, your intellect is not drawn anywhere else. You live in the household, but you remain pure. तो गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना ये कोई कम बात है बच्ची से. Child, to live in the household and remain pure is not a small thing. स्वयंवर भी कर करके गंधर्व विवाह कर करके भी ज्ञान तलवार बीच में योग की और कोई रह सकते हैं बच्ची से. Child, would anyone else be able to remain pure with yoga and with the sword of knowledge in between? Some even have pure marriage. तो यहाँ तो देखो बहुत है बच्चे, स्त्री पुरुष, क्यों वो सब कहते हैं कि हम है ब्रह्मा कुमार कुमारी. You see, here there are so many. Husband and wife live together. How is that possible? They say we are Brahma Kumars and Kumaris. अर्थात शिव के है बच्चे जरूर सभी निराकार के. Definitely, all are the children of Shiva, the one who is incorporeal. फिर है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा है जगत पिता और सरस्वती है जगदम्बा. And we are Brahma, Kumars and Kumaris. Brahma is the father of all the people, and then there is Saraswati, the mother. ठीक है ना बच्ची. तो इस समय में तुम बरोबर शिव के बच्चे, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी. At this time, you are the children of Shiva, and then Brahma, Kumars and Kumaris. यानी जगदम्बा की अम्बा वो हो गई, तो तुम तो भाई भाई हो गए, तुम विकार में जा नहीं सकते हो. You are the children of Jagadamba, and so you are brother and sister. You cannot indulge in vice. Acha, to sweet stars of knowledge, love and remembrances from the mother and father, Bap Dada,